Now exercise 3F. Find the HCF of the following number by listing the factors. You have to find the HCF of these numbers. Firstly write down the factors of 24. 24 कौन से टेबल में आता है ये वेरिएबल लिखना है हमें. 1 के टेबल में तो सारे ही आते हैं, ठीक है. 1. Then next is 2. Then next is 3. No, 3 yes. Then next is 4. Then 5 no. Then 6. Then 8. Then 12. Then 24. Now write down the factors of 36. 36 कौन से टेबल में आता है? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15 no. Then next one is 18. Then next one is 36. Now find out the common factors. Common factors. Common factors are 1, 2, 3, 4, 6. Then next one is 12. ठीक है, write down these common factors 1, 2, 3, 4, 6, 12. ठीक है. Now you have to find the HCF. HCF means highest common factor. In between these common factors, which one is highest number here? Which one is highest? 12. So our answer is 12. Now our third part is 40, 50, 60. Find out factors of 40. We have find here factors of 40 are 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 and 40. And factors of 50 are 1, 2, 5, 10, 25, 50. And factors of 60 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60. Now find out common factors between these three numbers. ठीक है? Which one are common? 1, 2, then 5. Then we have a 10. Then which one is common? 20, 50, 25, 50. No. 1, 2, 5 and 10. These one are our common factors. Now HCF. Which one? HCF means highest common factor. Which one is highest between 1, 2, 5 and 10? Which one is highest? 10. So our HCF is 10. Similarly, you will solve other parts. Now, second sum. Find the HCF of following by prime factorization method. Now you have to find the HCF of these two numbers by prime factorization method. Firstly, write down the prime factorization of 144, then 372. How we write it? 144. 144 comes on which table? 2. 72. Then 2, 36. Then 2 on 18, then 2 on a 9, then 3, then 1, then 372. 372, divide 372 by 2, what we get? 1, 8, 372 divided by 2, what we get? 186. ठीक है. Then again divide 186 by 2. ऐसे एक साइड पे ना डिवाइड करके देख लेगा. ठीक है. जैसे किस पे गया? 6 आ गया. किस पे गया? 93. Now 3 3 are 9. 93 3 पे ही जाएगा. 3 3 are 9. 3 1 are 3. साइड पे ऐसे डिवाइड करके देखो. ओके. Then 31 1. ठीक है. Now write down the factorization. Factorization for 144. Write down this side factorization. 2 multiply 2 multiply 2 3 4 multiply 3 multiply 3. Then 372. Write down the factorization of this side. 2 multiply 2 multiply 3 multiply 31. Now find out common these two, then these 3. ठीक है. 2 multiply 2 multiply this 3. Now अभी जो कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं उनकी मल्टीप्लाई भी करनी है. 2 2s are 4, 4 3s are 12. So our HCF is 12. Okay. Now our next sum. Next sum is 7th part. We will solve 7th part here. 180, 144, 192. Firstly find out the factorization of this. 180. 180 comes on which table? 2. ठीक है. Then we get 90, then 45, then 3, then 3, then 5, then 1.
this 44, 36, 18, 9, 3 plus 3. Now this one 192 divided by 2, what we get? 96, then 2, 48, then 12, then 6, then 3 and 1. Okay. Now write down factorization. 180 equals to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5, and 144 equals to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, and 192 equals to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. How many times 2 occur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Right? Multiply 3. This side factorization. Okay? Now find out common. This 2. This 2. Then again we have a common 2. यहाँ पे कोई नहीं है. Then again we have a common this 3. 2 multiply 2 multiply 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12. So our answer is 12 for 7th part. ठीक है? SCF is 12. Similarly, you will solve other parts for this question second. Now our third question is find the SCF of following number by division method. You have to find the SCF of these number by division method. Which one is our division method? Like this. You will make here division body sign. ठीक है? You will write 935. Smaller number is your divisor. ठीक है? You will write 935 here and bigger number under this division body. This is your dividend. Now divide करके देखोगे 935. 935 किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा. Then you will minus it. You will get 385. ठीक है? Then again make a division body sign. ठीक है? And you will write under this division body this number 935. ठीक है? Then it will comes on a table of 2. It will comes on a 2. ठीक है? 385. अभी आप ये भूल जाओगे. 935 को 385 के साथ डिवाइड करोगे. ये किस पे जाएगा? 2 पे. क्या आ गया यहाँ पे? 770. ठीक है? चेकआउट करके देखोगे आप. टेबल राइट करोगे साइड पे. Then again minus 165. Then again make a division body here and you will write this 385 there. ठीक है? And check out under 385 you will have 330. 165 का टेबल राइट करोगे. 165 को 385 के साथ डिवाइड करोगे. You will get this. किस पे गया ये? 2 पे. Now again divide. Again minus it. 5 minus 0 is 5. 8 minus 3 is 5. We get this 55. Then again make division body and you will write this here 165. ठीक है? अभी चेक करोगे 55 को आपने डिवाइड करना है. 165 को डिवाइड करना है 55 के साथ. You will write under it 165. ये किस पे गया? 3 पे. And remainder is 0. ठीक है? जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया then your sum is finished. यहाँ पे आपका सम कंप्लीट हो गया और your last divisor is 55. This is your HCF. So your HCF is 55. Similarly, you will solve other parts. Now third question, find the HCF of following number by division method. Now you have to given 3 numbers. In last question we have given 2 numbers. In this question we have given 3 numbers. ठीक है? How we solve it? ठीक है? Firstly we will take smallest numbers. ठीक है? Which one is the smallest here? So 2 smallest number. 213, 2485. ये दोनों smallest है, तीनों में से छोटे हैं. ठीक है? तो ये numbers लोगे. 213 here and make a division body and 2485 is your dividend. And then you will divide it. Take a 3 digits here. ये किस पे जाएगा? 248. Under 248 you will write 213 which comes on a table of 1, which comes on a 1. ठीक है? And minus it. 8 minus 3 is 5. 4 minus 1 is 3. Bring down 5. क्योंकि अभी हमारा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो हमने वो डिवीजन साइन नहीं बनाया. क्योंकि पहले पूरा डिवाइड भी करेंगे क्योंकि ये 5 डिजिट है.
5 डिजिट है, इसने भी तो नीचे आके पूरा डिवाइड होना है, तभी हमने यहाँ पे डिवीजन बॉडी नहीं बनाई, ठीक है। आगे अभी ये पूरा डिवाइड होएगा। नाउ 355, अभी 213 के टेबल पे ही देखो 355, इसके अंडर क्या आएगा 213, विच कम अगेन कम्स ऑन 1, ठीक है। एंड नाउ -8, 5 - 3 2, 5 - 1 4, 3 - 2 1, ठीक है। अभी ये पूरा हो गया डिवाइड हमारा, ठीक है। तो हमने इस स्टेप में डिवीजन बॉडी साइन बनाना है, इस स्टेप में आप डिवीजन बॉडी साइन बनाओगे। 142, अभी 213 डिवाइडेड बाय 142, ये किस पे गया अभी फिर, then it comes on 1, you will write here 142, then again -8, so 71, then again make a division body and 142 is here and 71, ये किस पे गया, अभी 142 को 71 के साथ डिवाइड करोगे, किस पे गया, ये 2 पे गया, एंड योर रिमाइंडर इज 0, ठीक है, योर रिमाइंडर इज 0। नाउ अभी हमारे पास 3 नंबर्स थे, 2 का तो हमने कर लिया, जो हमारे पास 71 लास्ट पे आया, जहाँ पे हमारा 0 आ गया वहाँ पे हमने स्टॉप कर देना। जो हमारा लास्ट पे 71 डिवाइजर है, दिस 71 विल डिवाइड दिस नंबर, ये अभी इसको इसके साथ डिवाइड करोगे 8520 को, ठीक है। ऐसे ही इसको डिवाइड किया, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर ये पूरा डिवाइड हो गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स योर आंसर इज राइट। नाउ योर एचसीएफ इज, जो लास्ट पे डिवाइजर है, योर एचसीएफ इज 71। सिमिलरली यू विल सॉल्व अदर पार्ट्स। Now for sum is show that the following pairs are co-prime. What are co-prime numbers? Whose HCF is 1 or who have only 2 factors. Number 1 and number 2 itself. ठीक है? Now you have to find out the HCF for this number, and we will find the HCF by long division method. ठीक है? We will write here this one and this one. अगर इसका HCF हमारे पास 1 आ गया, then they are co-prime. अगर 1 नहीं आया, then they are not co-prime. ठीक है? Now किस पे जाएगा ये, और that will goes on 1. 2 - 1 is 1. 9 - 6 is 3. Now again 161. Now it comes on 5. ठीक है? करके देखो 5. Now 11 - 5 is 6. 6 - 5 is 1. Now 11 - 5 is 6. 5 - 5 is 0. ठीक है? 31. अभी 31 डिवाइड 6, इस पे गया 5 पे, then 1 - 0 is 1, then 6, then 6, अभी देखो 1 के टेबल में 6 आता है, कहाँ पे आता है, 6 पे ही आता है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, रिमाइंडर इज 0। लास्ट पे हमारा लास्ट डिवाइजर क्या आ गया, 1, that means HCF is 1. So अगर HCF 1 है, then both of these numbers are co-prime. If so 161, 192 are co-prime. ठीक है? Like this you will solve this. Now we will solve fifth part, 621, 385. We have to check out these are co-prime numbers. Firstly we will do the HCF, we will find the HCF by division method. We will write 621 here, 385 here. Under 621 you will write 385 ऐसे ही जैसे आपको मेथड पता है, ठीक है। 1, then minus it you will get this, then 385 is there, and under this you will write 236 which comes on a 1, ठीक है। Then again minus it, then we will write again comes on a 1, we will write it under 236 149, then again minus it, then we will write under 149 87, then minus it 62, ठीक है। Then we will write this 87 here, किस पे गया फिर again goes on a 1, ठीक है। Then this is there is 87, 62, फिर 1 पे गया under 60, under 87 you will write 62, then minus it 25. I solve left part is there, 25 is written there, and our divisor is this one, no sorry, dividend is 62, so we will write here 62, ठीक है। Under 62 you will write 50, then minus it, then like this you will solve this part. लास्ट पे ये किस पे जाएगा, 1,
1 आ गया, दिस 12 इज हियर। नाउ 1 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 12 पे ही आता है। सो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर इज 0 या क्रॉस भी लिख सकते हो, ठीक है। सो अवर लास्ट डिवाइजर इज 1 हियर, so HCF is 1, so 621, 385 are co-prime numbers. Similarly you will solve other parts.